Mr. Speaker, if I may start from where I left over yesterday. And the reason for that, Mr. Speaker, is Order in the House, please. कल भी मैंने इस चीज़ पे इसरार करने की कोशिश की थी कि हमारा ना इस ऐवान का जो रिस्पेक्ट है वो इसकी इजाज़त देती है, ना हमारा जो रोल है जो हमें आइडियली और बाय रूल्स इस ऐवान में प्ले करना है वो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम इसको एक डिबेटिंग सोसाइटी की तरह ट्रीट करें. And that to a debating society which doesn't even have the right listeners. Mr. Speaker, isn't it ironic today that Mr. Ahmad Azhar, who doesn't have to have anything to do with finance, who happens to be the Minister of Industry, who has not been involved in the budget-making process, who is not holding any, real power as to what or if any changes will be made at all, is sitting here and going through these motions, and we are going through the motions of giving him recommendations. Isn't it ironic, Mr. Speaker? Mr. Chairman, isn't it also ironic that as far as, because हम finance budget की बात कर रहे हैं, sir, this is exceptionally relevant. I think rules allow करते हैं cabinet के, sir, I'm not government talking के about behalf पे any minister. I'm talking about what we're doing is ironical. I'll tell you why it's ironical. The whole purpose of this exercise, budget making process and budget approval process, is कि जी आपकी resource mobilization कितनी होनी है, वो आपको पिछली दफा कहा गया हमारी होगी 5.5 ट्रिलियन और आपकी असल में हुई प्रोविजनली 3.9 ट्रिलियन. अभी आप कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें इकोनॉमिक्स 101 पे बहुत बड़ा लेक्चर दिया, उसकी मैं पे अभी वजाहत पे आती हूँ, बिकॉज वो इकोनॉमिक्स मैंने भी आज तक आई वेंट थ्रू bachelor's in economics. I didn't go through the type of economics the Prime Minister was trying to tell us. But the point is that the whole point is कि resource mobilization की एक expectation हो जो कि realistic हो, जो कि हकीकत पे मबनी हो, और फिर आप उसकी allocation करें, and you basically get to choose who do you want to feed and who do you want to starve. Do you want to feed the sugar lobbies and the wheat lobbies and starve the sugar farmers and the wheat farmers? These seems to be the choices that you made in the past. So, Mr. Speaker, आप अगर ये पूछे ना पूछे, हम अपने आपसे ये सवाल जरूर पूछते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इस ऐवान को हक दिया है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर देखे और रिसोर्स एलोकेशन को अप्रूव करे, ये अप्रूवल साइकिल तो नहीं हो रही, ये तो डिबेटिंग सोसाइटी हो रही है, ये तो रबर स्टैंपिंग हो रही है, और हमेशा से थोड़ी वो हद तक होती थी. बट इतना बड़ा तमाशा सिर्फ इस हुकूमत ने बनाया कि जिन्होंने ये सारा कुछ बनाया वो कहीं नजर को नहीं आते. Not even during the Senate recommendations, not even during the cut motions, not even during his own ministry. Who is running the Ministry of Finance, may I ask? And is that person, is this not important enough? Because he knows it will be rubber stamped by, mashallah, the PTI sitting on the other side. Mr. Speaker, now I'll come directly to, और हम committees में भी उठाते रहे कि जी hot money पे आप जा रहे हैं, आप interest rate आपने unrealistically high किया हुआ है, hot money जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी, everything is under control, don't you worry, you know very little. This is the type of response that we used to get, right? And guess what happened? When this crisis hit us, where did that money go? So, Mr. Speaker, I'm coming back to what the Prime Minister tried to teach us yesterday on Economics 101. हमें बताया जाए current account deficit बहुत important होता है और उसी पे पूरी दुनिया देखती है. पूरी दुनिया सिर्फ उसको नहीं देखती. आपने खुद अपने पिछले बजट स्पीचेस में, अपने पिछले बजट में कहा था fiscal deficit बहुत important होता है. पूरी दुनिया उसको देखती है. Fiscal deficit में आपने देख लिया कि आपने क्या लगाया था और आपने क्या किया. और फिर हमें बताया जाता है कि जी ये सारा का सारा चोर चकारे हुकूमत कर रहे थे. एक पुराना गंदा पाकिस्तान, दकियानूस पाकिस्तान था, और अब एक राइजिंग शाइनिंग पाकिस्तान है. Khurram Dastagir has done a good job in explaining what happened during PMLN tenure. Give me the chance to be able to do it on the People's Party tenure, right? Because you cannot lie. Mr. Speaker, facts will us speaking through the documents that you have provided. And Mr. Speaker, sabse pehle, before I even come to that, I have never ever seen documents presented on this House with such callousness. I intend to do a privilege motion on this. Federal Budget 2020, demand for grants and appropriations. Do you know how many ministries the text is missing? Start counting. Cabinet Division, Nuclear Regulatory Authority, BISP, Defense Division, Commerce Division, Climate Change, Commerce, Textile, HEC. Yesterday, मैंने समझा था सिर्फ HEC किया हुआ because this was supposed to be their way of hiding the real numbers. No. As it happens, they think it's perfectly fine to give to you a book which they think nobody's ever going to open. Never before, Mr. Speaker, I can assure you, has this House been taken this callously. That not only wrong figures are presented by no less than the Prime Minister, but documents which are empty inside are given, and this is a perfect reflection of how this government thinks they're running the country. But the document should be glossy, inside it should be empty. This is remarkably a show of their unbelievable level of incompetence. Now, Mr. Speaker,
बताया गया कि जी इन लोगों ने तबाह और बर्बाद की। जो तबाही और बर्बादी की आप बात करते हैं, 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी 0.4% ग्रोथ था। 2013 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई तो 4% ग्रोथ था। आपको पता है ना, ग्रोथ से फर्क पड़ता है, कितने कारखाने चलेंगे, कितने लोग एम्प्लॉयड होंगे। और फिर जब ये लोग गए उस वक्त 5.5 पे आपके पास ग्रोथ छोड़ के गए थे। आपने माशाल्लाह पिछले साल 1.9 कहा, 3.9 हुई या 3.7 हुई, असल में 1.9 हुई। और इस साल माशाल्लाह आप बता रहे 0.4% होगी, आप खुद बता रहे -0.4% होगी। एंड इंटरेस्टिंग दैन द प्राइम मिनिस्टर टोल्ड अस टुडे, जस्ट रिसेंटली वी हैव द IMF has given a detailed report on the world economy, what's going to happen. We also happen to unfortunately read that detailed report. And you know, Mr. Chairman, what the Prime Minister forgot to tell this honorable house and to the population of Pakistan, that जब IMF ने ये सारे तखमीने लगाए तो उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया की इकोनॉमी जब रिकवर करेगी वो 5.5 पे रिकवर करेगी, चाइना की इकोनॉमी रिकवर करेगी 8.2 पे, इंडिया की इकोनॉमी रिकवर करेगी 6 पे और पाकिस्तान की इकोनॉमी रिकवर करेगी 1% पे। ओके, और प्राइम मिनिस्टर ने हमें यह भी बताया कि कोविड तो हमें शायद इतना बुरी तरह तो हिट ही नहीं किया जितना दुनिया को किया। तो अगर हम इतना अच्छा कर रहे थे प्री कोविड, तो पोस्ट कोविड दुनिया तो 5.5 पे रिकवर करी है, आप क्यों 1% पे मुश्किल से रिकवर करेंगे, अकॉर्डिंग टू द IMF as we told, right? Then we go on, Mr. Speaker, on public debt. Wasn't there a commission set up to find out what the PMLN and People's Party government did on public debt and how they could have such a disproportionate increase? Well, guess what? Your disproportionate increase far outweighs and exceeds every other government that has come in the history of this country. And I'll give you the numbers for that. 2008, 6.1 trillion. Again, this is all numbers coming in from your own documents. 2013, when People's Party की हुकूमत गई, 14.2 ट्रिलियन। जब इनकी हुकूमत गई PMLN की 2018 में 24.9 ट्रिलियन। Today the total public debt and liabilities of this country are at 35.2 trillion. In less than 2 years, this government has increased the public debt of this country more than what Pakistan People's Party government did in 5 years. So can we now have a commission perhaps and waste more time? बिकॉज कमीशन के बारे में ये दिस इज द टिपिकल साइकिल दैट दे रन, वो गलत हो गया, करप्शन होगी, लेट्स पुट अ कमीशन बन गया, उसके बाद किसी ने सोचा ही नहीं, किसी को बताया ही नहीं उस कमीशन ने क्या रिपोर्ट दिया। अब तो आपको, अगर आप फैक्ट्स पे जाते हैं तो अब तो आपको उस कमीशन को डाइवर्ट करना चाहिए उसकी अटेंशन, और उनसे पूछना चाहिए कि जी देखें कि हमारी हुकूमत में ये क्या हो रहा है। फिर मिस्टर स्पीकर, मिस्टर चेयरमैन, एक और बहुत चीज, बिकॉज सम पीपल से नॉमिनल फिगर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, ओके लेट्स गो टू द डेट सर्विसिंग एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, and when you go to that you find out that in 2012 it was 5.4%. And preceding that, you know, pretty much never was it more than 5%, or very few times. 2017-18 जब गए तो जब ये लोग आए तो 8.1% पे debt servicing चली जाती है, और फिर इस साल provisionally they're saying maybe 6.1%, which is probably likely to be higher. So Mr. Chairman, now if you go to the other dimension of what has already been said, okay, and the only reason why I want to stress on this is because you see यहाँ पे transparency का बहुत शोर मचाया जाता है। And Mr. Chairman, इस ऐवान में जैसे कि मैंने कहा, I genuinely want to really repeat it often enough so that it sinks in a little bit as to what a mockery this entire budget making process is. It was always, yes, made in Q block but approved, but at least there was a pretense of listening to the parliament, of parliament having the final word. Now even that pretense is out the window. And you want to slip in new taxation without being transparent about it? Because I have brought out for the third time on the floor of this house in the last 3 days only the whole question of petroleum levy. देखिए, आपके लोग इस वक्त बहुत सख्त मुश्किल में हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरह की इस वक्त ये कंट्री विटनेस कर रही है और पूरी दुनिया में विटनेस कर रही है, बट ये कंट्री पर्टिकुलरली बिकॉज इस कंट्री के पिछले 2 साल नए पाकिस्तान ने इस कंट्री को पहले से निचोड़ लिया था, बिजनेसेस पहले से बंद हो रहे थे, आपकी पॉलिसीज की वजह से एग्रीकल्चर नेगेटिव ग्रोथ पोस्ट कर रहा था, सो आपने पहले से उसको निचोड़ लिया था। व्हेन कोविड हिट इट वाज लाइक अ हरिकेन, उसमें कोई ताकत ही नहीं थी। अब मिस्टर चेयरमैन, जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस क्रैश की तो क्या इस हुकूमत का बनता नहीं था कि वो रिलीफ अवाम को, जो कि इनका भी दिया हुआ रिलीफ नहीं था, जो कि नेचुरली एक ऑयल प्राइस क्रैश से आ रहा था, ऑयल मार्केट क्रैश से आ रहा था, अवाम को देते? नहीं, इन्होंने अपने बजट में लिख दिया कि हमने जो पिछली दफा पेट्रोलियम लवी के मद में 215 कहा था अरब
और हमने असल में लिया 260 क्योंकि हमने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाते रहे, जब प्राइसेस कम होती रही, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कम होती रही, हम पेट्रोलियम लेवी बढ़ाते रहे ताकि हुकूमत को पैसे आते रहे और गरीबों से और आवाम से जाते रहे। अब इन्होंने इस बजट में the only, you know, when you go through the where is there new taxes coming from, and the only because you know Naveed Qamar साहब was asking this question कि नजर नहीं आता, जो सिर्फ एक चीज नजर आती है वो ये नजर आती है कि 260 अरब रुपए एक्स्ट्रा to a total of 460 billion rupees they have put under petroleum levy. Did the Prime Minister take the country into confidence? Did the Finance Minister take the country into confidence? Did Mr. Hamad Azhar in his speech on the other hand lied? And I'm using the word lied very, very carefully and responsibly on the floor of this house because you literally lied through your teeth. And you said कि हुकूमत ने कोविड की मद में पाकिस्तान के अवाम को पता नहीं 47 रुपीस और क्या कम किया, आप झूठ बोल रहे थे। और आप कैसे ट्रस्ट इस अवाम का ले सकते हैं? और आप इस and again I think another privilege motion should be taken up because this has never happened before, Mr. Speaker. People used to do their homework. You cannot, you know, I've said this before, but the intention seems to be to fool all people for all time. Or Mr. Chairman, दूसरी चीज and perhaps the आखिरी चीज which I would like to point out because again it's breaking every word you've given. It's going against the very principles that we have tried to establish, the ethos of what you think or what you profess to be doing for this country, and that is the circular debt, right? Because circular debt पे और the energy crisis पे, और ये होता है जब लोग जो कि इस काबिल नहीं होते कि उनको पता हो कि क्या challenges हैं, वो कंटेनर्स पे खड़े हुए बड़े बड़े बातें करते हैं और कहते हैं कि एक दिन में हम सब कुछ हल कर देंगे, और फिर जब आते हैं and the reality hits them and then they are least equipped to handle that reality because they have obviously, you know, have never been exposed to it, but more importantly, they have no intention to be exposed to it. They have no intention to learn in the job. They only have the intention of fooling people for as long as is possible. So, Mr. Chairman, I will end with this. On the energy sector reforms, you know what became of it? They have decided that circular debt, जो कि हमें वादा किया गया था इस अवाम से कि 2020 तक ये हुकूमत उसको खत्म कर लेगी, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेंशन किया कि उनको किस्त मिली थी, पर उन्होंने ये नहीं मेंशन किया कि 1.1 ट्रिलियन थी टोटल स्टॉक ऑफ circular debt when the PTI government came into power. And you know what the total stock of circular debt is? Instead of decreasing it, you have actually enhanced it to double, increased it by 100% literally, and taken it to about 2.1 trillion. And on top of that, Mr. Chairman, legislation is on its way to ensure that the burden of circular debt will be met out by the people of Pakistan. पाकिस्तान के किसान जो मुजफ्फरगढ़ में बैठे हैं वो आपके सर्कुलर डेट का खसारा देंगे ट्यूबवेल की प्राइसेस पे। पाकिस्तान की जो गरीब लोग, जो मजदूर जिनको आप जॉबलेस कर चुके हैं, वो आपका खसारा देंगे, वो आपकी इनकॉम्पिटेंस को, यू विल चार्ज इट टू देम। Mr. Chairman, I say this with a lot of confidence or learning, I would say, that it is the bad luck of ये पाकिस्तान की एक बहुत 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 बुरी किस्मत है कि इन मुश्किल हालात में, जो पूरी दुनिया में मुश्किल है, हमें एक इतनी इनकॉम्पिटेंट और इतनी झूठ बोलने वाली ऑन द फ्लोर ऑफ दिस हाउस गवर्नमेंट मिली। दिस इज आवर बैड लक। थैंक यू।